बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सोचना तेरी ज़ात तक, मेरी गुफ्तगू तेरी बात तक, न तुम मिलो जो कभी मुझे, मेरा ढूंढना तेरे पार तक। कभी फुर्सतें मिलें तो आ, मेरी ज़िंदगी के हसार तक। मैंने जाना कि मैं तो कुछ नहीं, तेरे पहले से तेरे बाद तक। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड या अली मदद। मैं तानिया मुनीर आज फिर आई हूँ आपका अपना शो लेकर, ज़िंदगी द लाइफ तानिया के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा प्रोग्राम बहुत प्यार से देखते हैं। इसी तरह हर ट्यूसडे रात 8 बजे कनाडा 1 टीवी पर ज़रूर देखिए। तो आइए बगैर वक्त ज़ाये किए छोटा सा क्लिप हम देखते हैं हमारे गेस्ट से रिलेटेड। क्लिप आपने देखी, आइए अब हम मिलते हैं हमारे गेस्ट से यहाँ पर जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बिल्कुल खैरियत से, शुक्रिया। गुड गुड। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज़। हाँ, मेरा नाम अरमान वास्ती है। I am a 19-year-old. I'm the first Pakistani Canadian football player to sign a professional contract in the top divisions of Spain. I grew up in Newmarket here in Ontario, Toronto. Nice. Grew up here my whole life. I have one older brother, मेरी भैया हैं, उसका नाम है ज़ियाद वास्ती. Oh, nice. My dad and my mom, I grew up with them. I had a pretty simple childhood. I did my studies throughout elementary school, Bogart Public School, and I went to high school in a specific sports school. The name is Bill Crothers Secondary School. They are a schooling that you have to apply for high school, and they take specific athletes, such as Bianca Andreescu. These are Olympians, people who perform in the Olympics, perform in the big stages of sports. So I was able to be selected. They select 500 people out of 10,000 that apply a year. So I had a good schooling system, a good upbringing growing up. My definitely helped me a lot throughout the whole time. उर्दू भी अच्छी बोल रहे हैं आप। I'll try my मेरा best. भैया मेरे साथ है। तो ये आपकी मम है जी। अस्सलाम वालेकुम, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम पे बुलाने का। थैंक यू। हम माय हस्बैंड एंड आई, हम लोग सन 2000 में आए थे एज इमिग्रेंट्स, जैसे बहुत सारे यहाँ पे साउथ एशियन इमिग्रेंट्स आए हैं, और दोनों बच्चे हमारे यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े। ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी हमारी नॉर्थ ऑफ टोरंटो, एक छोटा सा शहर है न्यू मार्केट, वहाँ पे गुजरी। अरमान वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, इनकी स्कूलिंग भी वहीं हुई। इनका शौक़ फुटबॉल खेलने का भी वहीं से शुरू हुआ। वहीं पे न्यू मार्केट क्लब से ही इनकी शुरुआत हुई पहले में, ये आपको ज़्यादा बताएंगे। हम दोनों इट्स डुअल इनकम हाउस होल्ड जैसे होता है, यू नो, वी बोथ वर्क। हमने कॉर्पोरेट लाइफ में काम किया, अब अपने अपने बिजनेसेस में काम कर रहे हैं। मेरे बड़े बेटे ने भी बिजनेस स्टडी किया है, उसका अपना बिजनेस ही इज़ रनिंग, लाइक he created his first business and when he was 19, and now he is 25 and he's running his second business. I think 19 नंबर का कुछ है हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 19 में, और इन्होंने भी ये प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर बने हैं 19 साल की उम्र में। तो सिर्फ यही थे जिनके पास सॉकर का कीड़ा था? एक्चुअली नहीं, हमारे घर में स्पोर्ट्स का शौक़ तो सबको है। इनके फादर को सबसे, मेरे हस्बैंड को सबसे, वो स्टेट लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पाकिस्तान में हॉकी भी खेल चुके हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं। इनके बड़े भाई को भी पिंग पोंग और बास्केटबॉल का बहुत शौक़ है, तो टेबल टेनिस भी खेलते रहे हैं। दोनों बच्चे हमारे रीजनल्स चेस में भी रहे हैं, रीजनल्स तक गए, नेशनल लेवल तक गए, लेकिन वो फिर आगे उसको परसू नहीं किया उन्होंने।
क्योंकि इनके अपने अपने शौक अलग और चीज़ों में भी थे तो इन्होंने फिर फुटबॉल को चूज़ किया. बट आई थिंक स्पोर्ट्स में बच्चों का इंटरेस्ट अच्छी चीज़ होती है बिकॉज इट कीप्स देम अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ other evil things that are happening. Nice. तो अरमान कौन से साल में कितने साल के आप थे कि आपको जब ऐसा लगा कि मुझे सॉकर ही खेलना है? I was 10 years old when I figured this out. Prior to that, I was playing baseball my whole life. At that time, my older brother, again, he was my idol, kind of a bit. Like, Amma and Papa worked a lot. Not like she was saying, dual income household, they were working. So my older brother took care of me when I was a younger age, for sure, after school. And I kind of just did everything he was doing. So he played baseball, I played baseball. He, whatever food he ate, I ate. He liked biryani, I love biryani. So that was kind of how it was. Until I was 10 years old, I saw Messi on the TV. He was playing the World Cup. And that mesmerized me, like a lot of other kids out there. You know, it was magical to see such a small guy have, you know, the whole country behind him, and he was changing the game. And I told myself and I told my parents that no more baseball. I wanna pursue something on my own. फिर कहाँ soccer किसी club में join किया आपने? I started off in the normal leagues like any child can here. I played in Newmarket, Newmarket United. I played there for about 4 or 5 weeks. And from there I was told that you have talent, you should take it a different level and go rep. कितने साल के हो गए उस वक्त आप? I was still 10 years old. अच्छा. The first year that I played was the first 2 months that I was told that I should move up a little bit. And I was very happy about that. My best friend, he was also playing football at a higher level at the time. So having that influence in school as well, I wanted to be there. So I was able to get my opportunity and slowly rise through the rankings of Canada. From 11 to 12 years old, I went to Aurora. Aurora has a league called OPDL, which is the Ontario Provincial League. That's when football is taking more serious for kids. So I played throughout there. Then I got a pretty big break at 16 years old. A legend from Greece, sorry, that's in Europe. He played with Maradona. He played in the World Cup of 1994. He came to Toronto to select 25 players out of a couple thousand to take them to Italy to play against professional teams, to show off the players from Canada that they have talent too. He not only selected me, but he made me the captain of the team, the number 1 player. तो उनको कैसे पता चला कि अरमान है कहीं पर? He saw me random. It was by luck. अच्छा. He again, I said this before, but football is a lot of hard work, but you do need luck. You need support. Right. You know, Amma and Papa. I say this a lot. It's a group project of what I've been able to do. The sacrifices that you have to make, not only as a player, but that your mother has to make, your brother has to make, your fish have to make, your dad has to make, like everyone has to make a sacrifice in order to be at the highest level. I think many players don't preface this a lot, and maybe I can be the one player to do that, but it's a group project for sure. So all this was going on at that time, and I navigated my way through Italy, through Spain, and landed myself. ओह वाओ. तो आसमा आपको कैसा लगा जब इनको इटली के लिए कॉल आई कि वहाँ पर लेकर जाएंगे? हाँ, we were excited. I mean, obviously it's a financial burden. कोई आसान नहीं होता है. लेकिन I always truly believe, my husband and I, कि हम बच्चों के पैशन को हमें फुली सपोर्ट करना चाहिए और हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनका टैलेंट कहाँ पर है, और जहाँ पे भी उनका टैलेंट है उसको 100%, 200% अपनी जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास है, उससे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं. एंड वी डिड. वी ट्राइड आवर बेस्ट जो हम कर सकते थे. कितने टाइम के लिए गए थे आप? ये गए थे आई थिंक 2 वीक्स के लिए. वहाँ पे टूर्नामेंट था. ओके. तो आप लोग चारों साथ गए? नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड गए थे. हम सब जा नहीं सकते थे साथ. यहाँ पे भी घर, इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव टू डू दैट. तो खाली अरमान और मेरे हस्बैंड साथ गए थे. एंड दे प्लेड अगेंस्ट बिग लीग्स देयर, एंड एज अ कैप्टन ही डिड वेरी वेरी वेल. तो वहाँ के नाम, बड़े बड़े नाम यही बताएंगे. लेकिन yeah, I played against Lazio. That's a first division. You know, if you go to Italy, everybody knows them. And I played against
you know, big tall players. I was 15 at the time. I was Oh my playing God. 25-year-old, 30-year-olds, you know, who do this for a living. So it was eye-opening for me. I was extremely young, but What happened on one of the days when you injured your arm and you still played? that was actually the Lazio game. Really? I woke up in the morning and my shoulder was frozen. And I said I couldn't move it. And the whole day I was kind of trying to bring my shoulder up and I couldn't go past like a decent level. But this is the biggest game of my life. Of course. At that moment. So I was never, I'm very competitive. I was never going to tap out. You know, I'm also the captain of the team. I have course, to. yes, It's your job, right? So I had to play through it. So I played these big guys, this professional level that I've never been. My arm was stuck to my. There's video of the game on YouTube, and if you watch me, I'm running like this. Like I have one arm moving, the other one is like stuck to my body. And they must have thought I was such a crazy kid. Maybe he has like a weird form or something. But literally my shoulder was dislocated. तो क्या हुआ क्या था? So after the game, I went to the doctors that were there, and they obviously only know Italian. So in their broken English, they said, "You play with that shoulder?" And I was like, "Yeah." And they're like, "Oh my God, sir." And I was like, "What?" And they snapped it back in. They boom, like that. I was screaming, and they're like, "Yeah." Dislocated sword. They were like, "You क्योंकि वो dislocated it." पिछले games हो रहे थे और उसमें किसी में टैकल हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, and that might have तो dislocated. इसने आपको बताया था? नहीं. No, I don't know how it happened. I woke up and it must have happened something like that, but I don't know. But ये बहुत फिर competitive. ठीक हो गया उस वक्त. After that, yeah, I dealt with it. It was what it was. फिर जर्नी कहाँ से आगे और बढ़ी? From Italy, I was then selected from there to go try out for a team in Spain. Okay. At that time, it was again I was maybe a month after Italy, so we all kind of come back, we rest, settle again, and then I had to go. So we took a trip to Spain. फिर कौन गया? सिर्फ इनके father गए. My father. Again, it's अच्छा. expensive to go. That was the duo. My father and I, we went country to country. So we got to Spain, and they said they had one spot available, and you will have a 2-week trial, meaning auditions for 2 weeks. And they will tell you after that 2 weeks whether you're good enough to stay. That trip was a whole experience in itself. It was a roller coaster of a ride. You know, my God. the first day I got to Spain, my father rented a car, you know, to drive around and get to our hotel. The car that we rented, we weren't received that car. We wanted a small little mini vehicle, and we got a big Sprinter van. Oh. And we never drove in a van before. It's a manual car. We're in Spain. We don't know the roads, the छोटी rules. गलियाँ. और स्पेनिश भी नहीं आती? Spanish भी नहीं Nothing. आती. So we were like, oh, okay, whatever. Oh. And 2 hours later, Papa crashed the car. Oh no. Papa hit something in the garage. The door was dented. Oh, my Our hand was on our head. And 4 hours, I had the biggest audition of like my life coming up, tryout. Oh my God, huh? And we have no clue if we can even get there. Will the car go? Whether like we need insurance, police, whatever. फिर? So we had Papa figure that out. I got about an hour sleep in, no food, no water, because we have no time, and I had to go. So maybe I had like a little, I don't know, a little chicken piece or something. I don't know what I had, because I don't know, halal, there wasn't much there, so we had to find that as well. So it was a whole thing. But we got there. I knew 0 words in Spanish. I was talking to them. I thought football was universal. Yeah, huh? Wasn't the case. Like I didn't know how to say half the things. So अच्छा. everything kind of came on that. But God willingly, alhamdulillah, I performed to the peak of my condition. I played amazing. Wow. To the point where they said, scrap the 2 weeks. You have made it, but you can go back. Oh. So I packed for 2 weeks up for a trip, thinking I'm going to go back to Canada and then maybe come back. So they said, you have to stay. So then we had to find housing. We had to figure out. नहीं तो पहले फिर मम्मी को बताया होगा ना हाँ, कि अब मामा ये तो है बेहोशी हो गई थी कि क्या हुआ ये. अब क्या होगा फिर नहीं, बिकॉज ये सिर्फ 10 दिन के लिए पैकिंग करके गए थे और अब सर्दियाँ आने वाली थी, सितंबर का महीना था, एंड आई वाज वेरी वरीड. लेकिन बहरहाल वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू. Okay. वी आर रेजिलिएंट लोग हैं, यू नो, कैनेडियंस हैं, हम इस वेदर में रहे हैं तो हमें अंदाज़ा है. Right. तो अरमान ने कहा कि अगर मुझे छोटे से एक मैट पे भी सोना पड़ा तो मैं यहीं सोऊंगा, लेकिन मैं वापस तो नहीं जा सकता. मैं नहीं जाऊंगा. एक ही स्पॉट है पूरे उसमें, पूरे डिवीजन में, पूरे टीम में, हाँ. एंड यू नो दे हैव सेलेक्टेड मी फॉर इट.
तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इन ही स्टेट। तो मेरे हस्बैंड उनको वहाँ छोड़कर आ गए। उन्होंने कुछ अरसे में उनको रेजिडेंस दिया, कुछ दिन के लिए रहे वहाँ पे। फिर देन एज अ फैमिली वी डिसाइडेड कि आई विल मूव देयर। मैं फिर जाके रही। अब पिछले 3 साल से मैं आती और जाती रहती हूँ। मैड्रिड और टोरंटो के बीच में ज़िंदगी गुजर रही है। तो आपकी जॉब से कोई वो नहीं हुआ? हाँ, लकी अगेन कनाडा में अक्सर एज अरमान ने कहा कि ये सब ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। लोग जब आप एक ठान लेते हैं कुछ करने की तो ऊपर से मदद आ जाती है ना। तो यही हमारे साथ भी हुआ। फिर हमारे लोग सपोर्ट करते चले गए मेरे काम पे भी, बिकॉज आई वाज अ बैंकर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो जब वर्क फ्रॉम होम पॉपुलर नहीं था, मैं आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम एट दैट टाइम। तो मैं वहाँ से भी काम करती थी, यहाँ से भी करती थी। कॉन्स्टेंटली इस तरह रहा, काफ़ी अरसे रहा। तो आपका बड़ा बेटा नहीं वो हुआ कि ये क्या हो रहा है? हाँ, ही इज़ अ वेरी यू नो बहुत ही कंजीनियर बच्चा है, बहुत ही यू नो सादा मिजाज बेटा है बड़ा मेरा, और बहुत हेल्पफुल है। और उसने Armaan said, I would say I don't know, something was given in him that he has a special figure in his. He was your second parent. He was my second father. When my father was working very hard in the banks and Amma, just as much, he stepped up. You know, at his age, at 12, 13, you shouldn't. You know, I didn't expect it. I don't know if they did or not, but he took me by his side throughout his whole life, and never once did he complain that you know my little brother is here. You know, kids are like I would be like that too if my friends, but he never said a word. Nice. He was the best big brother I could have had. Very good. फिर अब आप यहाँ पर आती जाती रहती हैं सर? जी, अब इन्होंने जबकि प्रोफेशनल सॉकर में प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो उन लोगों ने रेजिडेंस भी दिया है सब। ही हैज़ मूव टू दैट लोकेशन। तो अब मुझे उस तरह से वहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा। जैसे पहले ये छोटे भी थे, 15 साल से, यू नो 16 साल। पहला इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन उन्होंने साइन किया है, दैट वाज हिज बर्थडे, राइट अरमान? ही टर्न 16 दैट डे। तो 16, 17, 18 साल की उम्र छोटी ही होती है, यू नो। तो उस वक्त मैं साथ थी। अभी मैं यू नो मैं जाके देख लूंगी, लेकिन उस तरह से नहीं अब मुझे रहना पड़ेगा। अब आपको कुकिंग वगैरह खुद आ गई होगी ना? I had to learn, yeah. तो पका लेते हैं बिरयानी? नहीं, yeah, I have a diet. The dietitian gives me a specific thing that I'm allowed to cook. I can play with it a little, but that's just adding. You want red pepper or green pepper? Like it's not really that fun, to be honest. But yeah, I cook everything for myself. But it's basic foods. It's लेकिन आपको nothing. खाने में हर चीज़ weigh करनी पड़ती है स्केल में, है ना? No, it's the whole dietitian plan, so they give you everything. तो वहाँ पर भी है डाइटिशियन और यहाँ पर भी है? Yeah, I had here. I was very lucky. The Toronto Raptors, the professional basketball team, their dietitian worked with me directly. Oh, nice. So when I was growing up here, I had the grace of getting good dietitian advice, good plans, good meal plans. So I knew a good amount of knowledge going into it, but Spain took it to a different level. आपको ट्रेनिंग्स वगैरह भी करनी होती होंगी? Always. Always. Always training. तो कैसा अभी कैसा लगता है एज अ पाकिस्तानी कैनेडियन स्पेन में प्ले करना? कैसा आपको क्या फीलिंग लगती है? You know, it's obviously different. You know, different culture, different area. Canada-wise, I was always pretty aware of my surroundings. Everyone was very good. So Spain, I was just like I was a little scared. But I have pride in Pakistan and Canada, and it never went wrong really. In Spain, you had a lot of your skill talks on the field. To be really honest with you, if you're good, people treat you well. Definitely. If you're not, obviously, you know, it's the best of the best. The competition is #1 in the world, so nobody wants to play with somebody who's not good. Right. Religion, country aside. So that all respect comes, you know. Spain's a very respectful country and a very, very welcoming country. तो अभी आपको स्पेनिश भी आती है? Yeah, I became fluent. I've been there for 3 years now, so I was able to get it good. But there was definitely some moments at the start where it was tough, for sure. I mean, Amma knows as well. Her Spanish is a little. You may not want to ask her about that, but yeah. But yeah, it's any country you go, लेकिन right? आपका स्केड्यूल आपके कितना बहुत मुश्किल था, मुझे याद है जब आप यूथ डिवीजन में खेल रहे थे। For sure. At that time, again, I was new to Spain, and studies is, you know, Amma made sure studies is #1, no matter what's going on in life. So I had to make sure that, again,
I didn't know Spanish, so I couldn't enter in a Spanish school. So luckily, again, as I was saying, my high school, Bill Cruthers, was a sports school made for this. They had to make a special program for me specifically because the time online. Okay. Because this is just after COVID, and the time zone from Spain to Canada is 6 hours. Right. So I can't do regular school hours plus my training. So I had really had to work around it. I had training in the morning. I had my own Spanish classes right after, my food, my prep meals, and then I would do schooling for a couple hours, and then I had training again. Online schooling. So doing both of those was really tough, but I had to, and I got my high schooling diploma. तो अभी आपका ग्रेड 12 फिनिश हो गया है? Finished. और अभी आपने प्रोफेशनली ज्वाइन कर लिया है? Now I've taken my profession to football. तो आप यंगेस्ट हैं अपनी टीम में अब? Always, but really, Oh yeah, my God, always the youngest. But for this club, आपको yes. कोई ऐसा डर नहीं लगता है कि ये लोग तो इतने बड़े हैं, मैं कैसे इनके साथ प्ले करूँगा? It's competition at the end of the day. Papa, Rocky is someone that I always watched a lot. Papa used to show me Sylvester Stallone movies, and it was kind of like that. It's the sense of big, tall, strong, or skinny. It never mattered to me. It's the competition, right? If you're good on the ball, if you're able to do these things, then you can compete. I grew up again with the support as well. I was told, I was supported to fight, to try and do something, break grounds, break rules. Like, you're on this world for a reason. So I did that. Ho jayenge, like you do get scared, but I don't know. I think for me it was different. I always took it with grace. Very nice. So thank you so much guys. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर हम और थोड़ी सी बातें करेंगे. तो आप सब भी कहीं मत जाइएगा. ब्रेक के बाद आकर हम अरमान वास्ती से बहुत सारी सॉकर से रिलेटेड बातें करेंगे. तो वेलकम बैक नाज़रीन. हम ब्रेक से पहले नोमान और उनकी मदर से बात कर रहे थे. अब हमारे साथ उनके डैडी हैं. तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने का, इनवाइट करने का. इट्स अ प्रिविलेज. थैंक यू सो मच. अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. मेरा नाम नोमान वास्ती है. अरमान का फादर हूँ. हम यहाँ पे 2000 में कनाडा आए थे और उसके बाद से मैं बैंकिंग प्रोफेशन में था फॉर द लास्ट 21 इयर्स. डिफरेंट बैंक्स में मैंने यहाँ काम किया. और जो है उसके अलावा मेरा भी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है. पाकिस्तान में मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा. यहाँ आके भी मैंने बैंक के लिए भी काफ़ी अरसे 15-16 साल क्रिकेट यहाँ पे खेलते रहे. डिफरेंट डिविजन्स में हमने यहाँ टीम डेवलप की. तो हमेशा स्पोर्ट्स में रहा. क्या नाम था? यहाँ कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स में मैं काम करता था. CIBC. तो हमारी CIBC की कॉर्पोरेट टीम थी. अच्छा. और उसको रन करते थे. डिफरेंट यहाँ पे बैंकर्स लीग्स होती हैं और तो उसमें काफ़ी साल जो है इन्वॉल्व रहे. वजह से भी थी कि स्पोर्ट्स के साथ रहे. हमारी भी वुमेन की स्पोर्ट्स टीम है वैसे. अच्छा नहीं. हाँ, हमने बहुत कोशिश की उस वक्त डेवलप करने की. लेकिन उस वक्त इतने लोग नहीं थे. जो क्रिकेट यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब काफ़ी बेहतर हो गया. लेकिन असल वजह ये थी कि स्पोर्ट्स में रहने की कि बच्चे जो हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स में रहे. बचपन से ही हमने इनको हर वक्त जो है, मेरी वाइफ की हमेशा ये होता था कि घर में नहीं बैठें, टीवी के आगे नहीं बैठें. तो ये हर वक्त जो है किसी स्पोर्ट्स में 2-3 मल्टीपल स्पोर्ट्स में ये लोग इन्वॉल्व रहे. बेसबॉल भी खेल रहे थे, स्विमिंग भी करते थे. ये जो है बहुत अच्छे स्विमर भी हैं दोनों. दोनों भाई जो हैं प्रोफेशनल लाइफ गार्ड ट्रेनिंग इनके पास है दोनों के पास. और ये चेस भी खेलते थे. और तो बहुत सारे गेम्स में हमने इनको डाला था. और वजह यही थी कि देखें कि आइडेंटिफाई करें कि ये किस स्पोर्ट में सक्सेसफुल ज़्यादा हैं या जो इन्हें पसंद आता है. तो ये है कि दोनों बेसबॉल खेलते रहे. फिर अरमान ने आपको बता ही दिया कि अरमान किस तरह से स्पोर्ट्स में फुटबॉल में आए. तो बहुत इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट हम देखते हैं, जो इनको इनका बैकग्राउंड का नहीं पता कि हमने किस तरह से किया. सारा इंतज़ाम करना, लाना ले जाना. मैं बहुत सालों तक जो है वो अपने काम के बाद गाड़ी में बैठा रहता था शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक. जब ये खेल रहा होता था वहीं काम कर रहा होता था, कभी वहीं सो जाता था. क्योंकि इसका ड्रीम बहुत बड़ा था. और ये बहुत पुश करता था शुरू से कि मुझे ये करना है डैड, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूँगा.
तो अभी तो- आपको कैसा लगता है? सब आपको कहते हैं अरमान का डैडी जा रहा है। अरमान का डैडी जा रहा है, अरमान का डैडी जा रहा है या दूसरे बेटे ज़ियाद उनका डैडी जा रहा है, तो ये इस तरह ही होता है। तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट ज़िंदगी में होता नहीं है कि आपके बच्चों के नाम से आपको पहचाने जाए। तो लास्ट वीक अरमान आप लोगों का मीडिया एक हुआ था, राइट? Yes. तो उसमें क्या हुआ था? कौन कौन लोग आए थे? Bunch of media people came around from Local थे सारे? local and international as well. nice. It was a good mix of people. wow. They came for a certain slot time to interview me, get to know who I am and why am I doing this. And then I had a meet and greet after, which was really nice. A really good outcome of people came, of kids and parents who, you know, grew up just like me. I say it with my story a lot, and I think kids will really resonate with it in this sense that I wasn't crazy good at football, nor was I bad, but I had to put a lot of hard work, and I Right, of had course. and I did it in a country that football isn't as big, you know. And if you're in Canada, hockey is very big, basketball is very big. So Right. football is on the rise now with the World Cup coming, but at the time when I was growing up, it wasn't. So to go through the trials and tribulations here in Canada, a lot of kids will resonate with it, with the clubs I've played, the tournaments I've been in. There's not many success stories. Right. So to be one of those kids who is a success story in the leagues that everyone can play in, maybe I can resonate with kids. And I had a good outcome, and people showed up, asked me questions, got to know me a little more. I तो gave them बच्चों ने some बच्चों ने क्या सवालात किया आपसे? Who is your favorite player? How did you get So to what you this said? play? Messi again. Messi, of course. I mean, वो वहीं Messi से for Messi sure. चलता आ रहा है। Yeah. And well, I was teasing them too. Anytime they would say Ronaldo or something like that, I'd say, I don't know. But then, giving them, you know, we're all having a good time. But I was also trying to tell them, you know, the route that I took and that it's possible to do what I've done. I want people to realize that if I can do it, then they can too. You know, it's not, maybe it's not been done a lot, but it can be done. मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, इसकी जो मेसी की स्टोरी है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी को आइडियलाइज कर लेते हैं ना, तो फिर ये जब उसको इसने देखा, इसको पता नहीं इसके अंदर क्या चेंज आया, ये घंटों हमारे बेसमेंट में उसको देख के मिमिक करता रहता था। उसकी मूव्स हमारी सारी बेसमेंट तोड़ दी इसने कि नीदर इसमें सारा दिन फुटबॉल स्कूल से आके हमें पता ही नहीं होता था कि घंटों नीचे रहता था। और ये ट्रेनिंग उसको देख के करता था। फिर मुझे इसने कहा कि मुझे बार्सिलोना लेके चलें, क्योंकि बार्सिलोना में खेलता था मेसी। फिर ये 2009-10 जब इसका ये सारा हो, तो हम इसको बार्सिलोना लेके गए। और ये वहाँ पे जाके उसने सारी उसकी ट्रॉफीज को देखा और हक किया, बहुत पिक्चर्स हैं इसकी सारी। और फिर ये वहाँ फील्ड पे खड़ा हुआ और इसने वहाँ जाके मुझसे कहा कि डैड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ खेलूंगा इसी फील्ड पे। तो मैंने कहा 10 साल का बच्चा है, अभी छोटा है, इसको मतलब ऐसे ही कह रहा है, लेकिन इसका ड्रीम बहुत बड़ा था और ये उसके लिए परसू करता रहा। तो आई डोंट वांट टू हाईजैक हिज इंटरव्यू, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता रहा हूँ कि बैकग्राउंड जो है इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और यानी नॉर्मल बच्चे बहुत खेलते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा बच्चा नहीं था। ये हमेशा सबसे छोटा था उनमें, लेकिन इसका स्किल सेट पे ये इतना काम करता था कि ये कहता था कि कोई बात नहीं, जो मेरी स्किल है वो मुझे आगे लेके जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है, कि ताकि और बच्चे भी इंस्पायर हो सकें। हर बच्चा समझता है कि अगर मैं 7 फीट का हूँ तो मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, अगर मैं इतना स्ट्रांग हूँ तो मैं ये खेल सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कि आपके पास एक पैशन हो, हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्टी से काम करें और सारी सपोर्ट उनके साथ हो। तो ये आपका फर्स्ट ईयर होगा अभी एज अ प्रोफेशनल प्ले करने Yes. तो कुछ फ्रेंड्स बने हैं आपकी टीम में? आप Yeah, they were very welcoming people. You know, they're legends on that team, people who have been playing for years upon years, 11-12 years, तो veterans. वो आपको देखते होंगे कि ये पाकिस्तानी कैनेडियन है। Some people don't even know about that area. You know, they've been in Spain, so to have an international player, it's very rare. You see a Canadian and a Pakistani, so put it into one person, they're like, what is this, right? So it's a new thing for them, but I like that. I like to be somebody that I can show that there are people around in Pakistan have insane talent. Canada is definitely on the rise. We see that more. I want to shine light on Pakistan more as well. That the football level there is rising every single day. Definitely. And that if I can be a voice for Pakistan and show us light, give them light, play for them, I would love to do that. I would love to be in the Asia Cup or take them to the World Cup. तो और क्या फ्यूचर में क्या प्लान है? कुछ
That's exactly. Underprivileged जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, आपका कुछ ऐसा ड्रीम है? Yeah, aside from playing as well, I want to really shine light on Pakistan as well. I see Amma and Papa tell me all the time, you know, where they're from and where they've been, that there are some unprivileged kids there who don't have the resources like we all have it here. You know, mashallah, I'm very, very lucky to be where I am. Right. But I can give back for sure, and I want to. I want to go open camps and academies and teach the kids who maybe don't have the resources to be able to do that, of what I learned, the experiences I went through. Doing this would not only be good for them, but good for me as well, because my journey here, like I said before, it's a group project, Right. but it should be shown in that way, that it's a group win. It's not just me that's winning in this world of, you know, Armaan from Pakistan. I'm not trying to use the name. I want to bring them with me. I want to bring. I know it's a lot of people to bring, but you know, if whoever I can bring that is inspired by it, I want them to follow. I want them to maybe do the same thing. Nice. तो जैसे पाकिस्तान में तो चलो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, यहाँ कनाडा में तो लोग हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं हमेशा इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत स्कैम्स हैं. हर इंडस्ट्री में, हर गेम में आपको लोग कहते कुछ हैं, होता कुछ है, यू नो. तो उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. हमने इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद ये अंदाजा किया तो आपको किसी ने हेल्प की थी आगे? हमें जो है इधर उधर लोगों से इंफॉर्मेशन लेते रहे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ट्रायल एंड एरर से हुआ कि ये सीखा, फिर वहाँ वो चीज़ नहीं हुई तो फिर कुछ और कर लिया. लेकिन अब हम ये चाहते हैं, और ये अरमान का भी गोल है और मेरा भी, कि जहाँ भी हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स की, बच्चों की, चाहे वो हमारी कम्युनिटी से हो या आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी से, कहीं से भी हों बच्चे, उनको सही रास्ता दिखाना और सही तरीके से बताना कि ये ग्रोथ के लेवल्स क्या हैं और इन पे कैसे काम करना है, वो बहुत ज़रूरी है. आज माशाल्लाह अरमान एक है, ऐसे 10, 20, 50, 100 बच्चे जब जाएंगे, और यहाँ टैलेंट बहुत है. हाँ, हमारे बच्चों में भी बहुत हमारे बच्चों में सब जगह टैलेंट है, तो उन्हें रास्ता सही दिखाना ज़रूरी है. तो मैं भी हमेशा अवेलेबल हूँ, लेकिन अरमान इज़ ऑलवेज अवेलेबल. ये अपना इंस्टाग्राम भी बता देंगे, ताकि ये कि बच्चे इन्हें फॉलो करें, इनसे बात करें, मैसेज करें, चाहे ये स्पेन में हो या यहाँ पर हो, कहीं पे भी हो. लेकिन ही वांट्स टू हेल्प, एंड वी रियली वांट टू हेल्प आवर कम्युनिटी, लोग, और सब लोगों को के सही रास्ते पे उनको ले जाया जा सके. बिल्कुल. तो अरमान, इंस्टाग्राम पेज क्या है आपका? My Instagram is very, very simple. It's my name. It's Armaan_Wasti on Instagram. I'm posting quite often now. I'm going to be posting more about my daily life, things I go through, what my routines are. Feel free to drop a follow, message me if you want to know more. I would love to respond and get to know somebody else. Alright. अगर आपको बिरयानी बनानी सीखनी है तो वो भी अरमान आपको इंस्टाग्राम में बता सकते हैं. No, but if you want to teach me as well, I'm open. You know, if you want to send me some recipes, I'd love to learn. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. आप लोग इतना दूर से आए टाइम निकाल के. अरमान, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दिया. और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमेशा ट्यूसडे को रात 8 बजे कनाडा 1 टीवी पर ज़िंदगी द लाइफ तानिया के साथ ज़रूर देखते रहिए, और अपना और अपने चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हाँ, जीना मत भूलिए. अल्लाह हाफिज़.